हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी बॉडीज पे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू सीरीज विच इज कॉल्ड 15 minute show, right? So every day at 9 p.m. I'll come up with a video where we will discuss the concept of that particular topic, and like with the help of these particular small videos we will try to build your concepts. Like, believe me, these are definitely going to help you in your upcoming examination, right? So today's topic is balance sheet equation. I hope everybody is aware about the balance sheet equation. So whenever we talk about equation, it is asset are always equal to liabilities plus owner's equity. So now what does it mean? Okay, so first of all, this particular topic is common for your all regulatory body examination. If you are preparing for RBI grade B, CB grade A, grade B, even for exam or other examination as well, right? So believe me guys, this is definitely going to help you. So please do like and share with your friends also. So now whenever we talk about balance sheet equation, so equation is asset equal to liabilities plus owner's equity. So this is your equation. Now why always assets are equal to liability or plus equity? So first we have to understand this particular respect, then we will come to these particular areas, right? So I hope everybody is aware about the business entity concept. So there is a concept called business entity concept. So उसी से ये आपका कहीं ना कहीं लिंक है. So your if you talk about the equation, so equation is assets are always equal to liability plus owner's equity, right? So this is the equation. So now we will prove this particular equation, and how this equation will get tested in the examination, we'll talk about that particular one also, right? So there is a concept called business entity. Let's say there is a person, Mr. A or Mr. X, who started a business, and it is called XYZ Limited, let's say, ठीक है. So X आपका जिसने एक business start किया, जिसको register किया गया आपका XYZ Limited के नाम से. X started this particular business with 1 crore rupees, ठीक है. So suppose that 1 करोड़ के साथ इसने इस business को start किया. So now, as per the entity concept or business entity concept, okay. So business entity concept which generally separate a business from the owners, right? As per this particular concept, money contributed by owner is liability on the firm. So it is liability on the firm, right? So it is liability on XYZ Limited. And from this taken liability itself, we will create assets. Okay, so इसी से हम लोग आपका क्या करते हैं, आपका assets create करते हैं. तो business में हमेशा जो भी हम लोग आपका liability ले रहे होते हैं, उसी liability से आपका assets create कर रहे होते हैं, ठीक है. So now this concept will help you to understand this particular equation as well, right? सॉरी. सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो आपका ओनर को या बिजनेस को उसके प्रोमोटर्स या प्रोपराइटर से सेपरेट करता है, ठीक है. Money contributed by business owners or proprietor is liability on the firm, and from the taken liability itself we create asset. Now if you'll go through this particular one, अब आप इसको समझते हैं, ठीक है. So let's say if we create the balance sheet for this XYZ Limited as on 31st March 2024. So suppose that this is the data. So in case of assets we have and this is the liability. So we have taken a liability of how much? 1 crore, which is known as capital, okay, and it is also known as, sometime it is also known as risk capital, okay. So money contributed by owner or proprietor is called risk capital, okay. And from this, like, we'll create asset. So initially it is cash, 1 crore, and cash is your current asset. So your asset equal to liability, first scenario. In second case, suppose that this business XYZ Limited, they purchase property, plants, equipments, or they made a office setup, या जो भी आपका जिस भी बिजनेस में वो कर रहे हैं, ठीक है. सो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, गुडविल एंड एवरीथिंग्स, तो वो इन्होंने यहाँ पे आपका किया, ठीक है. सो दैट इज
let's say they spend 50 lakh rupees on this particular thing. ठीक है, इस पे इन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किए. So now how it will change your equation? Equation में changes क्या आएंगे आपका? So now as per the second one, so your if you talk about the liability, so it will remain same. Capital will we have only liability on us, that is 1 crore. ठीक है. And asset side, if you see asset side, okay, so property, plants, equipments worth rupees 50 lakh, and now your cash component will decline to 50 lakh. Okay, so 50 lakh minus 1 crore is equal to 50 lakh. So total, if you see the total, so it is 1 crore and it is 1 crore. Again, it is equal. Now the third सिचुएशन, ओके, तीसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ? लिसन वेरी केयरफुली गाइस, ठीक है. सो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है. सो नाउ द थर्ड वन इज, सपोज दैट दे हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक. इन्होंने अब आपका क्या किया? बैंक से लोन लिया वर्थ रुपीज 1 करोड़ फॉर 10 ईयर्स. ठीक है, 10 साल के लिए इन्होंने आपका 1 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से, राइट. सो नाउ हाउ दिस ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू इम्पैक्ट द कंपनीज बैलेंस शीट. सो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आपका आएगा? ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, सो नाउ लाइबिलिटी विल इंक्रीज टू टर्म लोन 1 crore, okay, and capital contributed by owners, which is also known as equity, 1 crore. And asset side, property, plants, equipments worth rupees 50 lakh, and now cash component will increase to 1.50 crores. So the total of these two is 2 cr and 2 cr. Okay, so this way, like, we have a concept called dual aspect of accountancy or double entry system, which says every debit has a corresponding credit. कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होगी तो उसके दो इम्पैक्ट आपके होंगे, तो वो दो इम्पैक्ट आपका मतलब वो दो अकाउंट को इम्पैक्ट डालेगा. ठीक है, तो ड्यूल एस्पेक्ट को हम लोग फॉलो करते हैं. दूसरी चीज, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका फ्रॉम द टेकन लाइबिलिटी इटसेल्फ वी क्रिएट एसेट. ठीक है, सो फ्रॉम टेकन लाइबिलिटी वी जनरली क्रिएट द एसेट. जैसे आपका वी फर्स्ट दिस XYZ took a liability of 1 crore from the owners, and we created asset of 1 crore, which is your cash. Second entry is basically we took a liability of worth rupees how much? Another liability, which is bank loan, okay, which is non-current liability. So again, from this liability we created or generated assets, which is cash. So it will increase your cash component, right? So this way, like, इसी वजह से आपका हमेशा your assets are always equal to liability. Now, sometime you'll see this is also known as outside liability, and this is your owner's money or proprietor's money. It can be initial money, or it can be retained earning, or it can be through share issue and other type of shares, right? So sometime, like, how you will get questions, so they'll ask you question like there is XYZ companies whose like, from the given information, suppose that their assets are all their assets are equal to 5 crores, their liability you have to calculate, and their equity is 3 crores. So like, from the given information, calculate outside liability. So what will be your outside liability? Now we know assets are always equal to liability plus equity. So if assets are 5 crores, so your equity is 2 crores. So what will be your answer? Your answer will be 3 crores, right? So your answer will be 3 crores. Sorry, 2 crores. Okay. So if we change this data, okay, so your liability will be, your outside liability will be 2 crores, which we have taken outside of the organizations, generally in term of loan or bonds or any other type of debt on organization, right? So this is your equation, and sometime they'll ask, yeah, this is a equation of a company whose assets are 5 crore, liability 2 crore, आपका equity is 3 crores. They took a term loan worth rupees 1 crore, and they purchased asset worth rupees 50 lakh from that taken loan. So how this transaction is going to impact your company's balance sheet? So what will be your correct answer? So your assets and liabilities both will increase by 1 crore. Okay, because 1 crore we took a liability, out of 1 crore rupees 50 lakh का हमने property plants equipment खरीदा. So that is non-current asset, एंड करंट एसेट आपका 50 लाख जो आपके पास बचेगा. सो नाउ व्हाट इज द गेम ऑफ करंट एंड नॉन करंट एसेट?
that we'll understand later on, right? So I hope now everybody is clear about assets, why always assets are equal to liabilities plus equity, and what is balance sheet equation, right? So थोड़ा सा theoretical aspect मैं आपको देता हूं. In case of business entity, an asset is created by taking liability of an equal amount, जैसे हमने आपका start किया था, ठीक है? Therefore the asset are always equal to liabilities. Understood? कोई डाउट है तो कमेंट्स में आपका लिखिए. थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं अब, ठीक है? एक्सटेंड करने का मतलब है जैसे now everybody is aware about about this equation, which include three aspects: assets, then we have liabilities or outside liability, and then we have shareholders funds, right, which is known as equity. Now it is further categorized among two like different parts, like current asset, non-current asset, current liabilities, non-current liabilities, शेयर होल्डर्स कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग. ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है करंट और नॉन करंट में? सो करंट एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट जिनके बेनिफिट आपको नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर रिसीव होंगे, ठीक है, जैसे बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, स्टॉक, कैश, कैश इक्विवेलेंट्स. सो दीज ऑल आर योर करंट एसेट. नॉन करंट एसेट्स जिनके बेनिफिट आपके क्या होंगे? लॉन्ग टर्म होंगे. लाइक we purchase a machinery worth rupees 20 lakhs and whose economic life or useful life is 10 years. So that machinery will give us benefit for next 10 years. ठीक है, अगले 10 साल तक हमें उसके benefit मिलेंगे. So that will be part of our balance sheet, और वो balance sheet में कहाँ पे आपको रहेगा? non current asset के अंदर. वही आपका अगर करंट लाइबिलिटीज की बात करें, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशन विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में आपका पेबल्स हैं, लाइक बिल्स पेबल्स, इसके अलावा जैसे रेंट, सैलरी, आपका टैक्सेस एंड अदर्स, दे आर जनरली पार्ट ऑफ दिस. नॉन करंट लाइबिलिटीज विच आर पेबल इन लॉन्ग टर्म, राइट, तो जैसे टर्म लोन एंड अदर्स. दूसरी तरफ अगर हम लोग इक्विटी को समझते हैं तो वी हैव शेयर कैपिटल, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स और प्रोप्राइटर्स. इट कैन बी इनिशियल कंट्रीब्यूशन एज वेल एज एनी पब्लिक इशू लाइक शेयर्स इशू किए गए या अदर्स. Now what is retained earning? So that XYZ made a profit of 50 lakh rupees in first year and we reinvested the entire amounts in the business. ठीक है, तो जैसे कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो उसने पहले साल में या दूसरे साल में या जो भी उसने प्रॉफिट जनरेट किया, उस प्रॉफिट को हमने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटा बल्कि खुद के बिजनेस में या उसी बिजनेस में आपका इन्वेस्ट कर दिया. तो दैट अमाउंट इज जनरली नोन एज रिटेन अर्निंग, राइट? तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट योर बैलेंस शीट. सो हियर वी हैव एन एग्जांपल आल्सो. ठीक है, सो ABC कंपनीज बैलेंस शीट ऑन 31st March 24. देयर एसेट्स आपका कैश which is current asset 5000, account receivable current asset 600, inventory 900, again current asset, okay. Equipment is non current asset 1000. So total asset is how much? 7500. Liabilities, account payables 900, current liability, loan payable, it can be your non-current liabilities. So total liability is 4,400. Owners equity, money contributed by owners 2,700. Retained earning is 400, right? So total is this. So this plus this become 7,500. So that's why your assets are always equal to liability, because from taken liability itself we have created these particular assets. Understood? कोई डाउट है तो आप अपने डाउट लिख सकते हैं. Here we have a list of current asset, non-current asset, current liabilities, non-current liabilities and others also. ठीक है, सो ये लिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप जैसे रेशियो एनालिसिस स्टडी करेंगे. रेशियो एनालिसिस मैंने क्यों नाम लिया, मतलब बेसिकली इंटरप्रिटेशन पार्ट आप करें. सो व्हेन यू विल इंटरप्रेट द डेटा फ्रॉम बैलेंस शीट, so there are some ratios like for liquidity ratio we have current ratio. So current ratio is current asset divided by current liabilities, or like for quick ratio or asset test ratio, quick asset divided by quick liabilities. And now if you have clarity about the which comes under the current asset or which come under the non-current asset, then only you will be find out the answer of this particular question, right? जब आपको पता होगा कि जैसे from the given information, suppose that there is a balance sheet, जैसे ये आपका एक बैलेंस शीट आपको दे देंगे, ठीक है, ये केस आपको दे दिया. अब अगर आपको इसमें ये पता होगा कि this belongs to current, this belong to current, this belong to current and this belong to non current, तो आपको करंट रेशियो निकालना होगा. सो यू विल ऐड दीज थ्री फिगर्स, ठीक है,
एंड करंट लाइबिलिटीज आपका यू विल एड दिस वन ओनली, ठीक है, लोन पेबल्स विच इज नॉन करंट. सो नाउ दिस डिवाइड बाय दिस, योर वर्क विल बी वेरी सिंपल, राइट. सो इसके लिए आपको इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है. और मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब अगर जो ऐसे लाइबिलिटीज हैं जो अगले 12 महीने में पेबल्स होती हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है. सो कैश एंड कैश एंड इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, स्टॉक इन्वेंट्री, marketable securities and prepaid liabilities like prepaid rent, prepaid salaries and others, ठीक है. Non-current we have land, office building, manufacturing plant, vehicles, natural resources, investments, patent and trademark equipment. So basically these deal with property, plants, equipments, goodwill, trademark, copyrights. So these are generally non-current assets, right? Current liabilities, account payables, payroll dues and payroll taxes, short-term note payable, income taxes, interest payable, utility, rental fee, and others. Non-current liabilities, we have long-term loans, long-term leasing, debentures, bond payables, deferred tax liabilities. So these are generally comes under your non-current liabilities. Okay. So similarly, we have शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग. शेयर कैपिटल आई होप अब सबको समझ में आ गया, मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स, ठीक है. दीज ओनर्स कैन बी प्रोमोटर्स और एज वेल एज अदर शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो आपका आए हैं, ठीक है. रिटेन अर्निंग इज सिंपली कि जो प्रॉफिट हमने अर्न किया उस प्रॉफिट को हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर बैलेंस शीट इक्वेशन. आई होप सबको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है. Or now for next 10 days, I'll come up with every day at 9 p.m. I'll come up with a short video, like जिसका ड्यूरेशन 10 to 15 मिनट्स के अराउंड आपका होगा. हर दिन हम एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट. तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं इनको वन बाय वन हम लोग आपका समझते जाएंगे, ठीक है. सो विल हैव अ गुड बैंक, जिससे मतलब जो सारे इंपॉर्टेंट है ना वो मैं सारे आपको कवर करा दूंगा, ठीक है. सो अगर आप लोगों को ये चीजें रहेंगी तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, एंड डू शेयर योर फीडबैक ऑल्सो, ठीक है, जिससे थोड़ा सा हमें आइडिया लगे कि लाइक हाँ आप जो मैसेज हमारा वो प्रॉपरली कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट. सो दिस इज आवर लक्ष्य बैच. सो लक्ष्य बैच, आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट लक्ष्य बैच. So Lakshya Batch is a foundation course for RBI Grade B 2025. So, and this is the best time to prepare for RBI Grade B. And guys, this course is designed for phase 1, phase 2, as well as your interview portion, right? Phase 1, every subject. Phase 2, descriptive plus objective. And even we will provide you descriptive portal also. And phase 3, which is interview, we will provide you interview guidance also. So it's a kind of one-stop solution for your RBI Grade B examination. So if you're comfortable in English medium, so you can go for English medium batch. And if you're comfortable in English language, so you can go for the English batch. ठीक है, तो दोनों batches आपको यहाँ पे मिलेंगे. This is our Telegram group, so do join this particular group, and we will share PDF or important videos, link and other important information related to your upcoming examination. Okay, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू. एंड आपके कोई ऐसे टॉपिक हैं जो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगते हैं तो आप उनके नाम भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. सो आई विल कम अप विद स्मॉल वीडियोस बेस्ड ऑन दोस पर्टिकुलर टॉपिक आल्सो, ठीक है. सो आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम 9 PM एवरी डे फॉर नेक्स्ट 10 days. सो लेट्स सी आप लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होता है, एंड रेगुलर बेसिस पे आपका छोटे छोटे उनको स्टडी करेंगे. वी डू हैव इनफ टाइम, सो उसकी तरह आपका एक बहुत अच्छा बैंक हमारे पास होगा, ठीक है. So this is it from my side, guys. Please do like and do share this session with your friends also. I'll see you tomorrow at 9 p.m. So bye bye. Take care all. Good night. Thank you.